So, hello everybody. Today is our very first class on financial modeling using Excel. So, आज हम करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड यूजिंग एक्सेल. सो हमने अपनी पिछली क्लासेस में जब हम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, सो उसमें फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में हमें पेबैक पीरियड निकालना सिखाया जाता है एंड इवन वो एग्ज़ाम में भी आता है. सो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसे हम जैसे व्हाट अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन, उसमें से हम माइनस करते जाते हैं जैसे जैसे उसकी पे बैक आती जाती है. देन उसमें जिस ईयर पर्टिकुलर में उसका अमाउंट क्लियर हो रहा है, व्हाट द अमाउंट वी इन्वेस्टेड वी गेट बैक, उस पर्टिकुलर अमाउंट में हम हमारा पे बैक पीरियड ख़त्म हो जाता है. सो सी मैंने उसके पहले जो हमने पहले ग्रेजुएशन में कर रखा है, उसका एक मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल टाइप बना रखा है. पहले हम वो देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ वी डू द कोडिंग बेस. क्योंकि एक्सेल में कोई ऐसा एक स्पेसिफिक कमांड नहीं है, स्पेसिफिक ऐसे को कमांड आप लिख नहीं सकते वी डू इन सम मीन इक्व करके निकालते हैं. सो उस तरीके से हम पे बैक पीरियड निकाल नहीं सकते. सो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है जो हमें विजुअल बेसिक में करना पड़ता है. सो पहले मैं एग्जाम दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ वी डू इन अ पे बैक पीरियड अर्लियर एंड हाउ वी डूइंग इन द एक्सेल शीट राइट नाउ. सो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट ताकि ईजियर हो समझने के लिए. ठीक है. सो सी, 0 year in the is the year where we invested. Suppose for an example, take you we have taken an cement company which is in which he invested a thousand. It's an example. So he invested rupees 1,000 in some project A, B, C, whatever you can take. So and that the amount will be invested. Okay. So in the first year the 250 rupees has been recovered from that project. Then in second year it's 120 and so on. सो हमारी वैल्यू कैसे आएगी, हम नेट फिगर्स पे कैलकुलेट करते हैं. जैसे सपोज मैं तो एक्सेल से कर रहा हूँ. सो कॉपी में करते तो हम क्या लेते हैं कि 1000 माइनस 1000 है, क्योंकि हम हमारा जो बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर बैलेंस शीट, उसमें से तो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है. सो हम उसे माइनस में लेते हैं, राइट. देन क्या होगा, ये तो पर्टिकुलर एक्सेल शीट है तो इसमें तो एल्जेब्रिक टाइप में हम लिखेंगे, क्योंकि जैसे हम कॉपी में करते हैं डायरेक्टली वी डू 1000 माइनस 250. बट यहाँ पे एक्सेल है तो इसमें एल्जेब्रिक टाइप से आप लिख सकते हो, सेलेक्ट दिस एंड प्लस एंड दिस. सो -750 डायरेक्ट इफ़ वी डू इन अ कॉपी तो हम सीधा 1000 में से 250 -750 ले आएंगे. सो ये तो एग्जाम्पल है. सो इतना कोई एज एन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एक थोड़ा सा रिव्यू है कि व्हाट वी डू अर्लियर एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे इटसेल्फ. सो ठीक है, तो अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे. सो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई. अब ये वैल्यूज़ में एक चीज़ देखो, इन ईयर इन ईयर 5 what we the value is -380, means there are some amount which is remaining to cover our 1000 of the rupees which is pending to it. So in year 6 when we repaid 800 more, तो क्या हुआ, हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई. इट मीन्स जितना अमाउंट हमें चाहिए था एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उससे हमें ज़्यादा आ गया. सो इट व्हाट डज इट मीन कि इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो भी पे बैक पीरियड होगा इट्स मोर देन ₹5, more than 5, more, sorry, not rupees, year, more than 5, and what will be less than 6. Is that clear? Then अब जब more than 5 and less than 6 आएगा, it will be in something like 5 point, the answer, the payback period will lie between something like 5 point something. इट विल गो ऑन. सो हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हम सिर्फ ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना कि 5 ईयर में हो गया, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आती है. तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही कमांड्स लिखे गए हैं, ताकि अभी तो ये छोटी सी शीट है, बट जब आप कंपनी या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो तो देर विल बी नॉट दैट जस्ट दिस अमाउंट ऑफ शीट, देर विल बी मच मोर डेटा. तो आप उस पर्टिकुलर शीट को जस्ट ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप देन फॉर्मूला लगाओ एंड पर्टिकुलर शीट पे लाओ, ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. सो उसी के लिए हम डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करके देन उस पर हम विजुअल बेसिक पे जाके हम उस पर कमांड करते हैं. मैं तो मैक पे कर रहा हूँ, बट मैं इसका विंडोज़ का भी तरीका इसमें बता दूंगा कि हाउ वी शुड एक्टिवेट द डेवलपर ऑप्शन. दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इट्स वेरी सिमिलर टू इट, मैं दोनों को ही बता दूंगा. देन उसके बाद तो एज इन व्हाट आई एम डूइंग इन अ मैक इट्स सिमिलर टू द व्हाट वी डू इन अ विंडोज़ कंप्यूटर. ओके. So see, first we see what are the steps you can for the Windows one.
from which you can turn on the option of developer option. See, first you have to go on the file menu. Then you will see there is will be the option menu after opening the file menu. Then there is a screen pop out in which you have to go for the customize ribbon menu. Then this screen will be turned on. In this you are seeing this, there is an option of developer. Check the Tick the checkout checkbox, and this will be turned on and look like this. For the Mac users, you have to go the word in the above bar. There's word Excel. Okay, so huh. So go on the word preferences. Here you will see a ribbon and toolbar, and the same menu bar will be pop out in front of you, and turn on this developer option and just save it. Okay. Now we are on the same page, Windows and Mac on the same page. Okay, both of the Excel are same. So this screen will be in front of you. Here you can see and developer option will be appears in front of you. Click on that. Now there is an visual basic option in the ribbon bar. Select this out. Eight. I just minimize the screen so it will be easier. Yes, see, this particular tab will open from your Excel sheet. It is a direct connection of both the sheet. If you close any of the sheet, both the sheet will be closed. Okay, so don't close the other previous sheet which is working in beside of this. Okay, now what you have to do, listen carefully. There you can see an kind of a chart type icon in this Visual Basic, Microsoft Visual Basic. Just in their side there is a down bar. Click on that, and module. It will be similar in both the Excel, Windows and Mac, so it doesn't matter at all. So click on the module button. Okay, so this type of coding arena, or you can say coding space, will appear in front of you. And before starting the code, it doesn't matter that you use capital words or not, it doesn't matter. But wherever the underscores, colon and as well as the spaces, and space is matters between the two of the words, but doesn't matter in while use in the row. But and also you have to be carefully writing the code, because if you miss any of the S words, like we use not cash flow but cash flows, so you have to be carefully writing this particular wordings in while writing this code. Okay, so I just write it down the whole code. After that I will make sure I will teach you how, what is the meaning of particular words, why you using that for, and go to like this and all of this. Okay, so first I write it down the whole code, and also I will just take a screenshot and provide it in you the Excel sheet downwards. Okay, so don't worry about the water code I have written, because this is a very big code, so it's not possible to remember all of that, but after practice you can do this. Okay. You see, there is whenever there are some specific words which Excel recognize it. So whenever you write like this now, the Excel recognizes that word. See, if I write range, so see,
See, if my first line is correct, it already shows that it is some kind of a program. The Excel doesn't know that it is a starting program, but Excel recognizes that it is a some program. So automatically in you can see there is a payback PRD program. He understand that, and the given the end function means you have to write something between what you do, what you want to do with this particular commands, and there is a something. So you can see. So we use semicolon. Once the command which you have put in is something is okay from the okay, just like when you write something in word and the grammarly says that it is right. So this kind of thing Excel does. If your program is look like it's grammatically as per the Excel program is correct, so they will just read it out.
So this is the this is the whole program. So understand what does it mean by every wordings, every sentence which I have used, what is going for. We aware of the fact the commerce student are not uh, very the commerce student are not very have done that coding in their early classes and all, so it doesn't require that. You have to just starting lines are the being the same from till start to here. What does mean in the row? It means that in year by year the value is changing, value is paying, so we are selected the row count. Okay. I does mean from the integer value. This is a very general program. If we put from n, if we replace n from 10 in this particular sheet, it will work because it's the number of year. And why we not taking 0? Because at last the Excel is selecting the 0 for their summation, so we can't take 0. So we are taking 0, we 0 year, and the year which in which we had invested amount as 1. Okay. So 1 to n is our total number of years, including the year which we are invested, in which we were in which we invested the amount. Okay. So in the cash flow, we selected the range cell. Next I means till then it will reach the following command which we have which we written down till the command which we achieve that. Next I does mean that. Okay. We whenever the next I means we have seen the example right now. मैंने एक example भी बताया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, कैश फ्लो हम इन्वेस्ट किया, उसके बाद हम पे करते थे, उसके बाद हमारा जो एक नेट वैल्यू आती थी, हम यही कर रहे थे ना. सो इट इज़ डूइंग सेम थिंग. डायरेक्ट जब हम कॉपी में करते, मैंने बताया था कि हम सीधा माइनस कर देते थे वैल्यू को, बट ऐसा एक्सेल में नहीं होता. जो एक्सेल है एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस पे यूज़ करता है, लाइक प्लस माइनस माइनस होता है, इस तरह से काम करता है. तो जिस भी टाइम पे ऐसी सिचुएशन अराइज हो, हम ये वाला फॉर्मूला एक्सेल को दे रहे हैं कि आप ये करो, सो द आंसर विल बी नेगेटिव. जब तक कब तक करो, जब तक आपका जो सम है वो इक्वल टू जीरो ना हो जाए या तो ग्रेटर देन जीरो ना हो जाए. ठीक है. ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, और इक्वल टू जीरो यानी बिल्कुल जितना हमारा अमाउंट है उतना आ गया हमारा. सो इसीलिए हमने प्रोग्राम दिया. देन ईयर तक जो भी ईयर पे ऐसा होगा वहाँ तक ऐसा ले लो. सो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम. हाँ, एक और चीज़ है, ये जो फॉर वर्ड है, फॉर इज़ अ कमांड विच वी यूज़ जब भी हम पाइथन और ऐसे कोई प्रोग्राम सीखते हैं ना. तो जो फॉर होता है एक लूप प्रोग्राम के लिए होता है. तब तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ टिल देन द प्रोग्राम जो हमने एंड जिस पे कंडीशन दी है वो एंड अचीव ना हो जाए. ठीक है. जिस भी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि आपका जो फंक्शन या तो ज़ीरो से ग्रेटर पॉजिटिव पे चला जाए और इक्वल हो जाए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को पकड़ लो. एंड उस पे यहाँ पे गो टू 10 का मतलब है जिस भी टाइम पे ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हो जाए उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगा दो. ठीक है. एंड फंक्शन ने अपना काम कर दिया. दिस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इसका पुट कर दूंगा एक्सेल के नीचे ही मैं लगा दूंगा फाइल में ही. सो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ अब एक बार ले सकते हो. ऑल्सो मैं इसके बाद अभी एक एरर, इसके बाद ये भी दिखा दूंगा कि अगर किसी कंडीशन, क्योंकि बहुतों को ऐसा होगा कि एरर राइज हो या कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है. मेरा अभी ध्यान नहीं जा रहा, किसी में मिस हो गया तो देखते हैं. अगर नहीं हुआ है तो कमांड काम कर जाएगा सीधा, बट अगर हुआ है तो एक बार फिर चेक कर लेंगे कि एस कहाँ मिस हो गया, क्योंकि हो सकता है ना, इट्स अ ह्यूमन माइंड. सो हम इसे रन करते हैं. ओके. अब रन करने के लिए क्या होगा, यू कैन सी यहाँ पे जो एक्सेल का एक आइकन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करो. इट मीन्स प्रोग्राम थोड़ा हद तक रन हो गया. अभी नहीं पता कि हमें करेक्ट वैल्यू दे रहा है कि नहीं, बट हाँ रन कर दिया एक्सेल ने. सो हम अपनी शीट पे जाते हैं. ठीक है. दिस इज़ अ शीट. अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें जनरली हम जैसे लिखते हैं ना इक्वल टू, हम जैसे हम सम ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम्स आ जाते हैं. अब हमने अपना कमांड लिख दिया है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पे बैक. देखो हमारा डिफाइंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ गया जो कि अवेलेबल नहीं था, बट अब इसने ले लिया. सेलेक्ट किया, इसके बाद पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लो, एंटर. अब कंपाइल एरर आ रहा है. अब कहीं पे मतलब हमने मिस्टेक की है. अब उसको एक बार देखो कहाँ मिस्टेक हुई है. ठीक है. एक बार रीचेक करो सारी चीज़ को. पे बैक PRD, इट्स ऑल राइट. मेंशन द डायमेंशंस, हाँ ये भी सही है. मशीन कैश फ्लोज,
सी, देखो मिल गया ना। टाइपिंग में है, कभी ना कभी मिस्टेक हो सकती है, अच्छा हुआ एरर आ गया, हमें पता चल गया, अब हम उस पर कंप्लाई कर सकते हैं। आपके साथ भी हो सकता है ना। एंड वेन यू जब आप एग्जाम में या प्रैक्टिकल में बैठो, डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। आपको एरर पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम आप रट के जा नहीं सकते, तो एरर वहाँ पे होंगे ही होंगे। वो एरर को पकड़ना है। प्रोग्राम तो आप याद कर लोगे, एरर नहीं पकड़ोगे तो काम नहीं करेगा ना। एरर ही पकड़ना मेन चीज़ है, एरर पकड़ो। कहाँ कहाँ पे क्या, अगर कुछ भी ऐसा चीज़ हो जाए, कहीं से भी कुछ एरर आ जाए, आपको ये पता नहीं जो इस एरर के साथ डील कैसे करना है। प्रोग्राम तो सब याद कर लेंगे, बट अगर सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एरर को डील करना ही नहीं आता, उसका पहली बार में प्रोग्राम वर्क कर गया, देन वो तो सोचेगा कि भाई अब प्रोग्राम रन करके आप कुछ एरर की ढूंढने की जरूरत नहीं। और एक और बंदा होगा जिसने क्या कहते हैं, उसका पहली बारी में 3-4 बारी गड़बड़ी आई, उसके बाद उसने एरर पकड़ लिया, अब एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए उसका प्रोग्राम सही निकलेगा ही निकलेगा। एरर को भी वो डील करना जानता है। तो इसीलिए एरर से भी सीखो। ठीक है। अब देखो, एरर से सीखने के बाद, एरर आपने पहचान लिया, अभी मैंने और तो चेक नहीं किया, मे बी ना ही आए, अच्छी बात है। ठीक है। अब एरर हमने कर लिया, हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी एक्टिव हो चुका था, तो हमें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रीसेट करना पड़ेगा। अब रीसेट कैसे करोगे? सी, अब यहाँ पे देखो, ये लाल सा एक जैसे हमारे जब हम प्लेयर चलाते हैं, म्यूज़िक प्लेयर, उसमें एक पॉज बटन टाइप का आता है ना, पॉज, प्ले एंड रीसेट। ये देखो, ये रीसेट वाला बटन, इसको क्लिक करो। द प्रीवियस प्रोग्राम विच वी इंसर्टेड इन द एक्सेल हैज़ बीन रीसेटेड। हाँ, रीसेट हो गया। अब इसको रन करो। ठीक है। अब इसको अगेन हम सेलेक्ट करेंगे, select this particular range, then enter, again compile error. If there is any, oh, I missed the I word here. कोई बात नहीं, मैं करेक्ट प्रोग्राम वैसे भी डाल दूंगा, बट आना तो चाहिए ना एरर। हो सकता है गलती, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, देखते हैं। अगेन कुछ मिस्टेक आई, एक बार और सर्च करूँ, देखो क्या क्या रह गया। The program looks right, just reset it. So there were two mistakes when we writing the program. Was when first mistake, first error was this where we put in 2i, है ना। सो उसको करेक्ट करो, देन कैश फ्लोज केस चेक करो। ज़्यादा गलतियाँ यहीं पे निकलती है, तो मैंने भी चेक की व्हाट मिस्टेक आई हैव डिड। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक ब्रैकेट नहीं लगाया था। उसका ब्रैकेट ना लगाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे द प्रोग्राम जो था वो पूरे को ले रहा था, जबकि हमें क्या करना था, इसी में से इसको माइनस करना था। जस्ट लाइक बोर्ड मास जो हम यूज़ करते हैं, तो कैश हमारा जो एक्सेल है उस वैसे ही कुछ कुछ काम करता है।
सो मैंने ब्रैकेट लगाया एंड देन यहाँ पे माइनस को थोड़ा दूर किया सो दैट इट विल वर्क, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि देर आर समथिंग लाइक आप एस भूल जाओ तब ये प्रोग्राम गलत दिखा देगा। आप कुछ भी आई डबल लगा दो, एस भूल जाओ, डायमेंशन को कर दो, सो ये रॉन्ग दिखा देगा। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड गो टू 10 का मतलब मैंने समझा दिया ना, कि जैसे ही प्रोग्राम की सेटिस्फैक्शन कंडीशन फुलफिल होगी ये प्रोग्राम उस पर लग जाएगा। अब देखो, रीसेट किया, ओके, सम एरर फ्रॉम एक्सेल साइड, डोंट वरी, प्रोग्राम इज सेफ, सो नो इश्यूज विद दैट। हाँ, सो हमने इसको रीसेट करा एंड देन रन इट। अभी इसको पहले क्लियर करते हैं सारा। Now put that payback period function, select this, enter. Does it reset all the settings? Everything looks all right. So I recorrected the program. So the mistake which I had done, I can't see that mistake where I had done the mistake, but ऐसा होता है ना कि एक्सेल में समटाइम आप स्पेस ज़्यादा दे देते हो एंड कुछ ऐसा दे देते हो, तो उसकी वजह से वर्क नहीं करता। सो व्हाट आई थिंक इज़ कि आप बिल्कुल स्पेस ही मत दो किसी भी एक लाइन के साथ में। सो आप डायरेक्टली एक के नीचे एक लिखते जाओ, सो इट विल बी डेफिनेटली वर्क। सो अब इसको रन कर लेते हैं, सिंपल, अब तो कुछ है नहीं, अब तो प्रोग्राम ठीक ही है बिल्कुल कम्प्लीटली। सो रीसेट इट एंड देन रन इट। अब जो लिखा है उसको पहले डिलीट करो, पहले जो प्रोग्राम था, सेलेक्ट दिस आउट, सी द वैल्यू आ गई 5.475। जैसे हमारी एक चीज़ थी, मैंने बोला था कि 5 से ज़्यादा आएगा एंड 6 से कम आएगा, सो दिस विल वर्क। पर बहुत ध्यान रखना कि आप प्रोग्राम में क्या लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा कितने एरर्स आए, 3 एरर आ गए, जबकि स्टिल द प्रोग्राम आई नो, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगा कि एस में मैं मिस कर गया, आई में मिस कर गया एंड इवन दैट ब्रैकेट्स में मिस कर गया। सो इट कैन हैपन, सो रीसेट इट, देन यू कैन ट्राई। और स्पेस बिल्कुल मत छोड़ो, से अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर टाइम में आपको जो एक जहाँ पे भी आपका सेंटर आएगा या फिर जहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल होगा, पता नहीं वहाँ पे कौन सा एक्सेल का मतलब एक्सेल का वर्जन होगा, वहाँ पे लाइक आपका स्पेस, किसी में स्पेस के लिए आज के नए वाले जो एक्सेल्स आ रहे हैं उस पर स्पेस को भी ये लोग काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड जो पिछले वाले उसमें क्या होगा। सो वाई टेक रिस्क, कोई स्पेस ही मत छोड़ो, बिल्कुल एक के नीचे एक लिखते जाओ प्रोग्राम, उससे सब सही रहेगा, ठीक है। सो वैल्यू आ गई। इसके बाद जैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में हम IRR डिफरेंट जो हमने पढ़े थे वो हम यहाँ पे इशूज़ करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए तो बस इतना ही है ना। लास्ट में मैंने जैसा कहा था कि मैं कोड, जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ उसका एक फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। सो मैंने इसी शीट में मैंने यहाँ पे कोड की स्क्रीनशॉट एक डाल दिया है, ठीक है। ये करेक्टेड कोड है, ठीक है, सब चीज़ से करेक्टेड है। सो दिस इज़ अ कोड, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना ड्राइव लिंक से, ठीक है। बाकी इस कोड को बहुत थॉरली अच्छे से लिखना, एक एक वर्ड्स को देखना, क्योंकि विदाउट वर्ड्स इट विल नॉट वर्क, ठीक है। सो वर्डिंग्स डज मैटर। हाँ, मैंने इसमें स्पेस ले रखा है, कोशिश करना कि इसकी स्पेस हटा देना यहाँ से, क्योंकि जो नया वाला प्रोग्राम है ना, सी जो हमने लिखा था, हमने इस पर स्पेस डाला ही नहीं है। सो दिस इज़ ज़्यादा, ये ज़्यादा अच्छा है हर चीज़ में, क्योंकि ये जल्दी वर्क कर जा रहा है। वहाँ पे वो भी वर्क कर रहा है, आंसर दे रहा है, बट उसमें ना बार बार कंपाइल फॉर एक एरर आ जा रहा है, जबकि वो एरर आना नहीं चाहिए।
बट अब आ रहा है तो उसको कुछ कर नहीं सकते, अब यही एक तोड़ है। तो यही लिख लो डायरेक्टली ऐसे विदाउट स्पेस एंड इट विल वर्क। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।